Okay, so day 7, who no advance deal to drive session. We are starting with the result sharing. Anyone would like to share any results for yesterday, any one day, any specific thing? कोई सिचुएशन जो होते होते बच गई या गड़बड़ हो सकती थी नहीं हुई या कम गड़बड़ हुई या बहुत अच्छा हुआ अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, वो गड़बड़ हमारे दिमाग की होती है. बोलिए रजनीश. अच्छा, आकांक्षा ने भी हाथ उठाया. मतलब अभी जो मेरा ये वीक लास्ट वीक निकला ना, तो जो मैंने सोचा वही हुआ. कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मतलब अलग से मतलब जो मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया वो ना हुआ. सारी चीजें मतलब परफेक्ट हुई. कुछ एक दो चीजें छोड़ के बाकी मतलब मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ ना, जॉब के रिलेटेड बोल रहा हूँ, तो जिस हिसाब से मतलब मेरे को खुद एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा होगा. बट कई बार वो रहता ना, बॉस का फोन आया मॉर्निंग में, आज का क्या प्रोग्राम है, उनका जो मैंने दिया प्लान हो जाएगा बस. मतलब मैं एक वो सिचुएशन से उस मतलब बॉस से कितना क्या होगा, कहाँ से कैसे होगा, उस चीज से बचने के लिए हो जाएगा और ऑटोमेटिक हुआ. और आपको मैंने कॉल करके भी स्पेशली भी बोला था कि ये ऐसा हुआ है. ये मेरा मतलब प्लस हो रहा है. So I understand what Rajneesh is trying to say. He's coming from sales background. तो इनको बहुत कुछ टारगेट्स है इनका इस वीक का, जो शायद इनके बॉस को भी लग रहा था कि वो इम्पॉसिबल है. तो उसने इनके बॉस ने भी 3 बार पूछा, कर लोगे कर लोगे. एंड ही सेड वेरी कॉन्फिडेंटली, जब बोल दिया तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? बोला आप मतलब टेंशन, क्योंकि मैं भी नहीं ले रहा हूँ, हो जाएगा. And हाँ, मैंने मेरा भाई यही correct. That is exactly what Rajneesh said. And he closed all the targets जो शायद पहले कभी इनसे इस तरह से नहीं हुआ इतनी आसानी से, the way it happened this time. Am I right? राइट. 25 पे मतलब परसेंट प्लस हुआ है जो मैंने टारगेट दिया था. हाँ. तो मतलब आपने 125% कर दिया 100 का. हाँ. Perfect. Congratulations. So everyone please say congratulations to Rajneesh. Congratulations for Congratulations. Thank you. Sales. Congratulations, Rajneesh. Congratulations. Thank you. Thank you. Anyone else has anything to share? आकांक्षा, आपने हाथ उठाया था, बोलिए. हाँ, ये इस वीक जो इस हफ्ते का था, तो मैंने आपको बताया था पहले ही, जैसे उस मतलब पेशेंट के साथ में हुआ, वो तो था ये बहुत बड़ा मेडिकल. लेकिन कल का ये था कि थोड़ा दिन अच्छा नहीं किया था. लेकिन उसके बाद में जब मैंने फिर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया कि जो चीजें थी शायद मेरी वजह से, इवन मेरी ही वजह से थी, तो आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया. क्योंकि आज मैंने वो ओपोनोपोनो की चैंटिंग कंटिन्यू रखी. मैंने तो एक भी टाइम ये समझ लीजिए मैंने मिस नहीं किया कि मुझे करनी ही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, करना है इस वजह से. और आज का अच्छा इसलिए रहा क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो अपने अंदर अच्छा फील हुआ. ये चीज ये मतलब चेंज था आज के लिए मेरा. Awesome. Brilliant. अंदर से सही है तो सब सही है ना, मतलब दिमाग तो यही है ना, राइट. कुल मिला के दिमाग शांत रहना चाहिए, वहां पंगा नहीं होना चाहिए. ग्रेट, गुड है जी, बढ़िया. एनीवन एल्स? I've had a very positive day. Sure, please. In the sense कि मेरे दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थॉट आती है तो मैंने उसको इरेज किया है. And I've tried to keep that thing of taking the responsibility. So I'm trying to practice it, and the day went well. So that's it. And I watch basics are थोड़ा funny भी होगा that every day I go for a walk after this, and as I walk there are lots of mango trees. So I consider it as a magic if I get a mango. Generally मिलता है तो चिड़िया ने खाया होता है कुछ ऐसा. So past 3-4 days as I go for a round or when I'm walking, every round I get one mango. So I was just considering it as a magic. It's a fresh That mango. I wanted. Yeah, It's fresh mango. I mean, you can eat it. It's not contaminated. Proper
And वो ऐसा हो रहा था हर round में एक mango, हर round and same place पे. So that I found as a good magic. So I thought. Yes, it is. It is. You are attracting that frequency. You are getting it on non-stop, and you'd believe it. आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो. You're not putting an effort for it. It is happening on its own, right? You're not putting an effort. Is it? Is it I true, was right? desiring it and I was getting it. See, desiring is different, but you're not putting any effort, right? You're not standing there for 5 hours कि अब mango मिलेगा मुझे. You just pass by, and the moment you pass by, you get one for yourself for the day. इतना कि आपका अपना काम हो जाएगा एक दिन का, right? And believe me, that's how life is for all of us. If we are in the right frame of mind, if we are in the right frequency, it's same. The mango which Nidhi is talking about could be a movie in her life that every time she finishes one, she gets a new one. It's so simple as she can understand, and it's getting effortlessly. She's not doing an effort. She's just desiring it, and because she's going with the right frequency, she's getting it. Right? It's as simple as that. अब वो दिखने में मैंगो है तो वो छोटा दिखता है मैंगो, but that's how manifestation happens. It is not about mango. It is about I am getting thing without putting effort. It's effortless, and that is the magic. Right? जैसे रजनीश ने अपना जो सेल्स टारगेट है, he told me, मतलब बोला मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को चेज नहीं करा, मैंने किसी से फॉलो अप नहीं करा, सब खुद ब खुद आ गया. सर इस महीने का टारगेट पूरा करना था, ये ले लो, आप पैसा पकड़ो और हमको माल पहुंचा दो टाइम से. It happened so effortlessly. Else he was chasing distributors, he was running after them, और फिर भी 125% नहीं होता था. Go ahead Rajnish, please talk to your dad. And 125% कभी नहीं होता था, वो 90%, 85%, 100% कभी-कभी हो जाता था, but effortlessly इतना नहीं होता. And why it is happening? Because we are healing our negative energy. And these are small signs. If you can pick them, you can also say कि it's a mere coincidence कि मैं 4 दिन से रोज जा रही थी और मुझे वहां पर रोज मैंगो मिल रहा था. Or you can also feel that now I am at the right energy, I am getting things effortlessly, and this is just one of the signals. और वो इसलिए इतना आसान है क्योंकि आपके नजर में वो आसान है. But getting a movie or getting a big work is difficult in your head right now. The moment it becomes easy in your head also, you will easily start getting it also. And same goes for everyone. I'm taking an example of movie because she took that example of her life. So I'm taking it कि it's like the work which you get. जो भी आप काम लेना चाहते हो, वो आपको ऐसे ही effortlessly मिलता है. और मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है. In fact, end of 2021 was full of such surprises. People used to come to me कि भाई कुछ हो तो बता दो यार, मतलब something like that. मतलब people are chasing me to get them work. I am giving them work. Right? This was my situation a few months back. Exactly how it happened. I don't know कैसे हो रहा था, but it was magical. Right? So it's the same thing. It started with a mango क्योंकि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सही है, ये पकड़ो तुम, अब और मेहनत करो और अच्छी फ्रीक्वेंसी करो, तुमको और चीजें मिलने वाली हैं. Right? And it also is happening because we are cleaning our negative frequencies. We are cleaning all the negativity. We are cleaning all the negativity. बोलिए रजनीश, आप कुछ कह रहे हैं? पापा का कॉल आ रहा था. हाँ प्लीज आप डैड की कॉल ले लो, फिर ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ, so let us come down to the topic which we were working on. हम बहुत दिन से इसको कर नहीं पा रहे हैं, which is picking a negative frequency from any of the aspects of life. So मैं किसी एक exercise से शुरू करता हूँ, and we'll pick each and every one for all these. ये तो मैं अभिनव से शुरू करता हूँ. अभिनव आपने भेजा था ना मुझे कुछ? नहीं भेजा. नहीं, अभिनव ने नहीं भेजा. और किसने भेजा था? आई थिंक Deepika has sent. Can I take few examples from yours, Deepika, to understand and make everyone clarity? Yes, yes. Sure. Perfect. So let's take. So the thing, I mean, let's start with the thing. So it's a very simple thing that okay. So the feeling which she gets from her mobile phone thing, right?
and all of us have few feelings from our mobile. Like I tell you, I had little irritation with my Wi-Fi today. I was having few sessions in the evening, and everyone was complaining कि यार आपका ना network जा रहा है. So anyway, I switched my Wi-Fi. I was not angry then, but बाद में मुझे बड़ा गुस्सा मैंने कहा यार इतना पैसा एयरटेल को देने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है. और ये पता है ये रहा जब मैंने अभी जब when I started doing 108 times of no, I said sorry to my Airtel mobile Wi-Fi. I said sorry यार मतलब मैं क्यों पता नहीं क्यों तुम्हारे ऊपर irritate हो रहा था. It was my responsibility. I was responsible for this energy which I had brought, because of which you are not supporting me. Because all these years you had been working for me, right? I am using the same Airtel Wi-Fi for 4 years. Although I decided to change today, I'm wanting to go for Jio because of other features. But then, you know, it was not supporting me once, and I was, you know, really getting angry at it. And it's the same feeling. So with her mobile, I see that she gets irritation, she gets pissed off, she gets anger. Now these are very strong negative emotions, if you understand. Although it's on a thing, it's a mobile phone, right? It's a very small thing. But you have to understand, again, at the universe, at the energy level, we are all one, right? So if I'm giving this negative energy to the mobile phone, I get the same energy back again. Whether it's, you know, three things which he should work on. So let's try and fix all the negative energy with our mobile phone, starting with our feelings. Okay. So how do we do it? I can start with some music, light music, the same music which we do to practice Ho'oponopono. Okay. And everyone can do for their mobile, because I'm sure किसी सबको कभी ना कभी अपने मोबाइल से चिढ़ हो जाती है. Simple सी, right? Even I had multiple times. So close our eyes. Sorry. Close your eyes. Put a hand on your heart and move your hand in a circular motion. Right? Close your eyes and speak with me. Deepika, I have observed you don't speak. You just, I think, internalize. But it's better to speak, because when we speak, we send out the vibrations. Okay. So let's speak it out. I'm sorry, my dear mobile. I'm sorry for taking you for granted for so many years in my life. Although you had been a very, very important and an integral part of my life today. You're almost helping me earn my bread and butter. You are helping me stay connected with the entire world. You are helping me to talk to my mother and father. I'm sorry for putting this negative energy on you. This negative feeling of irritation, anger, and at times even getting pissed off at you. I'm sorry for not recognizing your value in my life. Please forgive me for being so harsh on you at times. I know you have been a strong support in my life. Please forgive me for this feeling of irritation, anger, and getting pissed off on you. Thank you, dear mobile. Thank you for coming in my life. Thank you for helping me all these years when I needed your support.
Thank you for letting me be connected with my loved ones anytime and every time. Thank you for helping me run my job, complete my work, and thank you for helping me use a lot of applications to support me in my routine life. I thank all the negative feelings of irritation, anger, and being pissed off for teaching me a lesson in life. Not to be angry, not to be pissed off on my mobile phone. I love you, my mobile phone, because all of which you have done to my life. You are my family because you keep me connected to my entire family. I love you because today you are an integral part of my life. I love all those feelings of negativity which I had for you. I love that feeling of anger, that feeling of irritation, and that feeling of getting pissed off. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Don't open your eyes. Take one deep breath. Just rub both of your hands. Make them really warm. Put it all over your face. And let's take 2 more deep breaths before we end. And we're done. So how do you feel, Deepika? I feel good. Okay. You feel the importance of this mobile phone in your life. Yes. And despite all the challenges it may be putting to you, probably it is the one most important friend of your life which may get you out of from gravest of the troubles. You know, whenever we are in trouble, the first thing we use is this only. We call up people, and especially from the place where you are thousands of kilometers away from your home. Yes. I think it is the only and the best friend which you have since the time you left your home. Right? So it's okay. At times it might even irritate you. So does our parent also, right? At times. So does our loved ones. In fact, as a parent, my kid tries to irritate me a lot at times. But it's okay. As long as I love it and I love him, they're all small things. I have to ignore them. Right? So this was more of a basic which I was trying to say, Deepika. The advance here is only a very small part which I covered during our session, which is that this feeling which you have for your mobile phone should get completely erased. And you have to do Ho'oponopono for those feelings. Those 3 feelings which you had mentioned for your mobile. The feeling of irritation, the feeling of getting anger, and the feeling of getting pissed off for your mobile phone just because it gets slow. And believe me,
You would not do anything in your mobile. Your mobile will run at double of your speed, which you can even imagine कि यार इससे तेज तो पहले भी नहीं चलता. I have experienced it actually. I have experienced it on my laptop, and it's not कि अभी भी problem नहीं देता है. See, it will give problems, but जितनी देर में problem देता है उतनी जल्दी solution देके ठीक कर देता है. Right? But अब ये जब मुझे problem देता है ना, तो I treat it as my own kid, as my own child. तो मुझे बुरा नहीं लगता ना यार, अपना ही तो बच्चा, क्या फर्क पड़ता है, इतने टाइम से मुझे मदद भी तो कर रहा है. I am talking to you because of this laptop of mine, right? And yesterday it was playing fishy. It was not letting me open my video, but it's okay. If I am sending my right vibration, it will fix itself. I don't have to go to anywhere. That is the power that you will have for machine, and the way we did it for mobile, we can do for anything. So I'll just check her. So mobile, movie characters. How does movie character bring negativity in you? I mean, sometimes some villainous characters होते हैं ना movies में, तो कि ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे characters को क्यों दिखाया जा रहा movies में, मतलब I'll be honest in one thing. Sorry about that. Now that you are becoming a master in your own life of healing, you should choose your topics wisely. Whatever you look, whatever you watch, please choose wisely. Don't watch stupid things in life, because most of it would be some horror movie or some. See, if you're watching a biopic or something like that, if you're watching a movie like Kashmir Files, could be fine, but although it's full of negativity, I would still say. But at the end of the day, it's a fact. So even if you're able to digest it, it's okay. But you go out and watch KGF 1, 2, 3, whatever those movies are. I've never seen that. नहीं, वो नहीं, मैं आर्टिकल 15 की बात कर रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी. Yes, Article 15 is a very powerful movie, but at the same time, it has got very negative connotation. Although it's true, it's an extreme truth of my own state. It was in Lucknow, which close to Lucknow, the place. So you're right. Article 15 has very extreme scenes and very extreme movie line. But the point is, that is where the Dr. Hewlett rule comes in. There are such people only because I am thinking about it. And Yeah, now I'm not saying that. I just wrote whatever came to my mind. Right, Yeah. right. No, I get it, because that's great that you have gone so deep that you have realized कि ये movie character भी आपको negative feelings आने में मजबूर करते हैं. So from here on, you have to heal this negative feeling about these people, and you have to feel that because I am feeling this negative feeling, such people still exist, and movies are made on such topics because such people exist. There's this movie, what, Arushi Kand or whatever, Nirbhaya. There are a lot of movies we created, and there are people who have done hideous crimes, right? So but the point is, देख कर आई. अब वो ठीक है, आंसर देख कर आओ. But the point is, I'll tell you few things which you should keep yourself away from. Please keep yourself away from newspapers and news channels. Why? Because 99% of it is negative stuff. You'll hardly find any positive stuff. They will not talk about all the good things that are happening in the universe. They will only focus on all the bad things in the universe. Why? Because as humans, we all attract negativity. हमको negative news मसालेदार लगती है, हमको मजा आता है सुनने. You would realize, मतलब I should not say it, but all our mothers, they love getting into such discussions. जब पता चलता है ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फोन आएगा, बोलेगा बताओ उसने ऐसा किया, अरे बताओ ऐसा करता है, ये भी होता है, and they will waste almost 1 hour on it without realizing. But that was their era. उन जमाने की कहानी अलग थी. हमारे era में, now that we are aware, it is only putting a lot of negativity in our life. So we have to flush it from our life. And how to flush it? We should not watch any news, because most of the news is negative. अब आप बोलोगे मेरे को जीके आनी चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है. पता चल गया तो क्या कर लोगे बताओ? आज रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, आपको सब पता चला दिया, एक न्यूज बता दी, कितने मर गए, क्या हो गया, कहाँ कहाँ क्या. What benefit will it come in your life? What change will we do in our life? I learned it from my mentor, by the way, even when I was doing business, and now that I'm also starting in this industry of
healing and working on law of attraction manifestation courses, I got a very clear understanding from my mentors that please stay away from media news channels, paparazzi, and all those news articles that people put on. Unfortunately for Nidhi and Abhinav, it's a little difficult because they are part of page 3. तो ये सारी चीजें इनको मिलेंगी. But to me, the suggestion is instead of reading about them, आप अपने आप को ऐसा तैयार करिए कि लोग आपके बारे में पढ़ें उस न्यूज़पेपर. You should rather read only articles about yourself than anyone else, even if they You are can always negative. filter the content you're watching. I don't watch news at all, but वही है कि when you are on social media, you get to know यार वो आ जाता snippets है. of everything. But ठीक है, उससे effect नहीं होना चाहिए. आप फिल्टर नहीं कर सकते. But the good news देखिए is सेम यही पॉइंट मेरा भी है, सेम यही पॉइंट मेरा भी था कि जैसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, न्यूज़ भी नहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन तीनों से मुझे नेगेटिव कंटेंट आता है, लेकिन फिर भी मैं वही देखती हूँ. ये चीज तो सवाल उसमें वही है कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्यों चलाना है? Unless you're doing business. See, Nidhi has a channel. She is building business there. So if she's putting stuff on Instagram and she's checking what her fans are writing, probably it's a business for her because she's a businesswoman. She's using it to earn money. It's her livelihood today, being on social media. But for you, Kansha, आप बताओ, आप सोशल मीडिया पर अगर आप अपना 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करते हो, और ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने खुद भी किया है और मैं अभी भी करता हूँ कभी-कभी. बट फर्क इतना है कि पहले मैं 2 घंटे बर्बाद करता था, अब मैं शायद 2 मिनट बर्बाद करता हूँ. 5 मिनट मुझे लगता है शिट मैं पागल हूँ क्या, मैं क्या लोगों की फालतू की रीलें देखने लग गया जाके. एंड आई इमीडिएटली क्लोज माय फोन एंड आई गेट बैक टू माय वर्क बिकॉज़ इट्स अ हैबिट, आदत है. और जब आप रील देखोगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ दिखने लगेगा आपको. जो आपके मतलब का नहीं है वो भी दिखेगा, जो मतलब का है वो भी दिखेगा, राइट? तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो कांक्षा, बट मेरा पॉइंट यही है कि why do you have to spend time in social media unless you're doing business in it? So for me, social media is also my business tool. Okay, it's a very big business tool. So I am purposely going there to build my business, not to check what is happening in the world. But आकांक्षा, अगर आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या उससे आप कोई पर्पस सॉल्व कर रहे हो, प्लीज यूज इट. इफ इट इज ओनली टू पास टाइम एंड टू नो व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, आई डोंट थिंक सो. मतलब अगर आपको जानना है कि आपके दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है, उसको फोन करके कॉल करके जान लो, ज्यादा मजा आएगा. That's my way of doing thing. At least that's how I feel कि मुझे अपने दोस्त के बारे में अगर जानना है, इनफैक्ट मैं किसी का पोस्ट देखता हूँ तो मैं उठा के उसे तभी कॉल कर देता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है कि मुझसे बात कर लूँ कि उसने क्या किया ये या उसको क्या लगा है, right? So it's a view. I'm just sharing my view. It's a choice. I mean, there's nothing rule in it. But मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन, हम कोई भगवान नहीं है. नेगेटिव हमारे पार्ट जिंदगी का हिस्सा है. फर्क ये है कि हम कितने कम समय के लिए अपने आप को नेगेटिव जोन में रखते हैं, वो हमारी ग्रोथ डिसाइड करता है. सो इफ यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दीज मीडियम्स, इट इज फार इजी फॉर यू टू रिमेन पॉजिटिव. एम आई देयर? बिकॉज एकदम से सब कुछ हाँ है. दीपिका की आंखें हिल रही, अभी तो इतना शांत थी, मुझे लग रहा था वो स्क्रीन ही खराब है. नहीं, ठीक है, ओके, आई एम देयर. So I hope I made my point clear. Where were we? Where did this all started? Okay, this all started from healing. So the point is that it is a choice. जबकि अगर आप असली में देखो तो अगर आप कमल की स्टोरी समझते हो तो आपको समझ में आता है कि सारा कीचड़ आसपास होता है और उसके ऊपर ही कमल खिलता है. अगर वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी तो डेफिनेटली नो नेगेटिव एनर्जी विल पुट यू डाउन और विल पुश यू एनीथिंग, बिकॉज आपके आसपास सिर्फ नेगेटिविटी होगी, फिर भी आप एकदम पॉजिटिव. इनफैक्ट you would be the source of providing positivity to a lot of negative people around you. But that's a process. It might take few weeks to few months for you not to be affected or impacted from any negative news. Like I remember I was giving an example to you guys ki if I tell you that your mom is right now crying hysterically, what is the feeling inside? Check what is the feeling. Now if I feel so, today evening only my mom was crying in pain, not literally crying, but she had a lot of pain in her knees, and the reason was we did very strenuous exercise for her knees, and after that she was in deep pain and she was very jittery. She was getting very annoyed and very pain. She was in pain,
I did help her, मतलब उनको थोड़ा पैर वैर दबाया, सब कुछ किया, but believe me, in my head I had no negative thoughts about this feeling of hers. I was only saying कि मेरे अंदर उनको सोच की ये डर या नेगेटिविटी ना आए कि अरे डॉक्टर ने क्या कर दिया या इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है. I was absolutely clear in my head. और शाम तक वो दर्द चला भी गया अपने आप, although मैं उनके लिए दवा ववा सब ले आया just for her her satisfaction, and she might have taken the medicine and she is asleep now. But what I'm trying to say share here is कि आप में से कितने लोग हो कि जब आप अपनी माता जी को लिटरली रोते देखोगे तो आप न्यूट्रल रहोगे या पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव नहीं रहोगे. इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू आस्क, क्योंकि आप बोलोगे यार कैसी पागलपंती बात है, मेरी माँ रो रही, मेरे भी आंसू निकलने चाहिए उनके साथ. बट दैट इज वेयर यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, बिकॉज आप अगर नेगेटिव हुए उनकी नेगेटिविटी को देख के तो आपने यूनिवर्स को और नेगेटिविटी सेंड की, बदले में लौट के वही आएगी, इनफैक्ट आपके मॉम को भी आएगी. सो यू आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प हर, यू आर एडिंग टू हर पेन. am I making sense? We discuss this again, I'm just reiterating because ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको उस जोन में रहना है तो आपको सारी तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को हील करना पड़ेगा. So like we did for phone, there are a lot of lists for all the people. Movie character, money, oh my god, money sad. Now how can money remain your friend जब मनी के साथ आपको सैडनेस एसोसिएट होती है, right? Isn't it quite ironical? And the good part is even when you feel sad about money, yet God is giving you so much of money. That is so ironical, and it's only because that पहले जितना वर्स नहीं है इमोशन, बट इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. वो तो है, बट फिर भी अभी भी सोचती हूँ मैं थोड़ा, मतलब जो अपना लास्ट टाइम जो डिस्कशन था उसके बाद मुझे काफी क्लैरिटी आ गई, बट स्टिल कभी कभार हो जाता है. अब now you have a similar feeling for your toast maker, so you know how toast maker आपको ब्रेड बना के खिला रहा है आपको नाश्ते के लिए, आपका काम आसान कर रहा है, वरना आपको लेट हो जाएगा, you will not get that toast the way you want it, right? Bathtub, okay, interesting. food stress देता है, कैसे? मुझे बहुत सोचना पड़ता है कुछ भी खाने से पहले कि ये खाऊंगी तो मैं शायद मोटी हो जाऊंगी. और कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव डाइट या कुछ ऐसे में चले जाती हूँ, फिर एक टाइम तक तो मैं फॉलो कर लेती हूँ, बट उसके बाद जो क्रेविंग्स होती है और फिर जो मतलब फिर मैं जब वो क्रेविंग्स को गिव इन करती हूँ एंड देन दैट्स इट. फिर अगेन जितना भी मैं एकदम मेहनत करके जो मैं 1-2 kg घटाई हुई रहती हूँ वो वापस गेन हो जाता है. तो फूड इज लाइक आई एम अ फूडी, मुझे खाना पसंद है, बट फिर वही है कि I have to think a lot before eating something. There is nothing wrong in being a foodie. The only thing is you need to control your diet. You should eat everything, but you should control what you want to eat and how much you want to eat. और वो हो जाएगा, man. It's not a big deal. Okay, food brings you stress. We'll work on this. Cyber security, information security, insecure, scare. एक चीज मुझे पूछनी थी, एक चीज मुझे, सॉरी बोलिए बोलने के लिए. कोई बात नहीं, आपके सबके डिस्कस होंगे, बोलिए. एक चीज मुझे पूछनी ये थी कि जैसे मैं जितना भी मतलब इंस्टाग्राम चलाती हूँ या फिर यूट्यूब चलाती हूँ और मुझे इस चीज का रियलाइजेशन भी है कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसकी जगह मैं हो'ओपोनोपोनो की चैंटिंग कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वहां पे मेरा टाइम वेस्ट होता है और बाद में फिर मुझे ये रियलाइज होता है कि यार इतना देर मतलब फालतू बर्बाद कर दे, इससे अच्छा चैंटिंग करके कुछ क्लींजिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी वही चीज रहता है. तो ये रिपीट पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाए? और इसको नहीं भी देखना चाहती हूँ एक्चुअली. नहीं ठीक है, ओके, लेट्स डू वन थिंग. सारे लोग, ये सबकी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना टाइम खराब करने की. पुट अ हैंड, आंखें बंद करें. I'll play the music again because this is interesting. Close your eyes, put a hand on your heart. Let's start. I'm sorry for this feeling of irritation and wasting my time over the social media daily.
Please forgive me for this feeling of wasting time on social media daily. I accept myself despite wasting my time on social media. It is okay to accept my time, waste my time, sorry, as long as I am ready to change. Even though I have wasted many hours in my life wasting on social media channels, I still love and accept myself exactly the way I am. Please forgive me for this feeling of getting irritated and the feeling of wasting my time on social media. Thank you for having this feeling of wasting my time on social media. Thank you for this learning. Thank you for this experience. I now know where should I utilize my time in life. I love you for this feeling of wasting my time on social media and that irritation that my time is losing on social media. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Close your eyes. Take a deep breath. Rub your hands again. Keep them warm. Put them all over your face. Take 2 more deep breaths. And be done. आकांक्षा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि इस फीलिंग का रियलाइजेशन है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हाँ। इसके बारे में फॉरगिवनेस समझ में आई कि मुझे ही वो चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। इट्स ओके। देखो हम इंसान है, भगवान नहीं है। मतलब भगवान भी हैं बट हमें रियलाइजेशन थोड़े टाइम बाद होगा। बट अभी हम एक इंसान है जो गलतियां करता है, उसका काम है गलतियां करना। तो मुझे रियलाइजेशन है ना, और मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ, आई फर्स्ट नीड टू एक्सेप्ट दिस। आई नीड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई नीड टू लव माई सेल्फ, राइट? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगा और अपने आप से चिढ़ूंगा इन चीजों की वजह से, तो ये आदतें कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगी। बिकॉज मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ ना, फिर अपने लिए नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। मुझे इरिटेशन किस पे हो रही है? अपने ऊपर हो रही है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इरिटेशन एक नेगेटिव फीलिंग है, और मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरी नेगेटिव फीलिंग है। तो भले ही मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट सबसे पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मैं कर रहा हूँ टाइम वेस्ट, मैंने एक्सेप्ट किया, और इसके बावजूद मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, बट मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। Is it making clarity? Do you feel that this will be powerful if we practice it in our life? क्योंकि कई बार हम सबसे ज्यादा अपने आप को कोसते हैं और यही नहीं करते। ये जो टेक्निक है ना, वो अपनो जो 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये हमें सबसे ज्यादा अपने आप को बोलना है, चाहे हम दुनिया के कितने गलत काम करें। और मुझे पता है यहाँ जितने भी लोग हैं, ये कोई खून करने वाले लोग तो है नहीं, कोई इतना बड़ा ग्रेव काम तो करेंगे नहीं। दे माइट ऑल डू थिंग्स जिससे उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो। आप जो काम कर रहे हो उससे क्या हो रहा है? आपका अपना खुद का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरे का नुकसान आप करोगे नहीं, क्योंकि इस तरह का आपका एटीट्यूड नहीं, राइट? अनजाने में हो जाएगा, बट आप जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करोगे कभी भी। अपना नुकसान लेकिन बहुत करते हो, और ये रेगुलर है, हम सब करते हैं। कई बार हम खाने का ख्याल नहीं रखते, पता लगा सुबह ब्रेकफास्ट किया, सीधे रात में डिनर किया। आई नो अमरीश इतने बड़े कर्मठ हैं कि वो 2 दिन तक भूखे रहे, उनको एक डेटा सेंटर में डाल दो तो 2 दिन तक डेटा सेंटर में ही कल लगे रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अपनी कंपनी को दे रखा है। तो ही इज डूइंग he's doing injustice to his health, but he can't be angry with himself,
He has to accept कि ठीक है मैं जैसा हूँ मैं अपने आप से प्यार करता हूँ. Because imagine his bread and butter is coming at home because of this dedication of his life. He's giving, you know, so much hours of his work, and he's earning damn good in his corporate. And why he's earning? Because he's putting that effort also. तो कीमत अदा कर रहे हैं इसलिए कीमत मिल रही है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. तो रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है और अपने आप को प्यार करना पड़ेगा. और जब अपने आप से प्यार करेंगे ना तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी मेरी हेल्थ, विच मीन्स मैं अपने टाइम पर खाना खाऊंगा, मैं अपनी बॉडी के साथ टाइम पर एक्सरसाइज करूंगा और मैं टाइम पर सोऊंगा. मतलब टाइम पर सोने का मतलब है, आई विल नॉट से कि हर बार रोज एक टाइम पर सो पाएंगे हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में. बट एटलीस्ट आई गिव 5 hours of sound sleep, minimum 4 to 5 hours of sound sleep as we start. Although it's all the mind game, आपने माइंड को मतलब okay, this reminds me of very very interesting point. एकदम से ध्यान आया. There is a gentleman whose name is बाबा प्रहलाद जानी. 2020 में बाबा प्रहलाद जानी का देहांत हो गया था 91 की एज में. आप चाहे तो उनके बारे में गूगल कर लेना. बाबा प्रहलाद जानी भारत में इकलौते, भारत में नहीं पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हैं. ओके, बिफोर दैट आई आस्क यू अ क्वेश्चन. हम बिना खाना खाए कितने दिन रह सकते हैं? एनी आइडिया? काफी दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे. कितने दिन? दिन बताओ, खाने के बताओ कितने दिन. खाने के ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर ना, 45 दिन. आपकी बॉडी का जो फैट है ना वो आपको 45 दिन तक रख सकता है. 40 दिन से लेके कम से कम 60 दिन तक, डिपेंडिंग ऑन आपका वेट कितना है, आपके अंदर चर्बी कितनी. मैं तो एक भी दिन नहीं रह सकता. करेक्ट अभिनव, ये आपने दिमाग को ट्रेनिंग दी है. आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना शुरू करो. आप 7 दिन तक कुछ नहीं खाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, लेकिन एक बात है, पानी के बिना हम सिर्फ 36 घंटे जी सकते हैं. कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान 36 आवर्स से ज्यादा बिना पानी के नहीं जी सकता. उसे 36 आवर्स में एक बार पानी चाहिए जिंदा रहने. नाउ दिस जेंटलमैन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाबा प्रहलाद जानी, ये गुजरात के किसी गांव में रहते थे सॉरी. और इन्होंने 11 साल की उम्र से 11 एट द एज, सिंस द एज ऑफ 11, इनका कहना था इन्होंने खाना और पानी दोनों हमेशा के लिए त्याग दिया था. और उनका कहना ये था, बिकॉज मैं एनर्जी हूँ और सूर्य एक एनर्जी है, तो मैं डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी लेता हूँ, मेरा काम ठीक है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, हम खाना कैसे खा रहे हैं, वही पत्ते फूल वो सब खाते हैं राइट. वो कैसे बना रहे हैं अपना खाना? सूर्य से बनाते हैं, क्लोरोफिल से उनका खाना बनता है राइट. सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन से, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना खाना बनाते हैं. क्लोरोफिल ऑलरेडी होता है प्लांट्स में, बट दैट्स व्हाट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. एंड if you don't give them sunlight, will they be able to make their food? No. So chlorophyll actually absorbs that sunlight, and that's how chlorophyll is already present in their body and it absorbs the energy from the sun, because of which they are able to make food, and we humans also eat that food. Sorry, कुछ तो लिखा है निधि ने, I told you to read. जादू की तरह धूप. Yes, sort of, you're right. And that was his thought कि यार जब मैं मतलब पौधों से खाता हूँ, पौधे भी सूरज से लेते हैं, मैं डायरेक्ट सूरज से क्यों नहीं ले लेता हूँ. एंड फ्रेंड्स दैट डे हमने कभी जिंदगी में ना तो पानी लिया ना खाना खाया. और उन पर 2 रिसर्च हुए 2004 या 5 में. कोई तो 45 कंट्री के साइंटिस्ट आए थे, यू विल नॉट बिलीव. उनको 16 दिन तक उन्होंने बंद करके रखा था एक कमरे में जिसमें कैमरे लगे थे, और उनकी 16 दिन तक टेस्टिंग तो हुई, उनका MRI हुआ, सब कुछ हुआ, बट 16 दिन में ना तो उन्होंने एक भी बूंद पानी लिया और ना ही उन्होंने खाना खाया. पीपल वर लाइक क्रेजी कि यार कैसा. और भारत सरकार को फिर एक आइडिया आया कि यार अगर ये टेक्निक लोगों को सिखा दी जाए तो जो हमारे सरहद में जवान खड़े होते हैं, जिनको यू नो बहुत सारी तकलीफें होती है और उनको बिना खाए बिना पानी पिए अगर चलना पड़े तो मर जाएंगे. बट अगर ऐसा उनको कुछ सिखा दिया जाए कि वो 1 हफ्ते या 10 दिन बिना खाना पानी पिए जंग में लड़ सकें और कहीं घुस सकें, तो आई थिंक हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं. मतलब ऐसी कोई जंग नहीं है, बिकॉज खाना और पानी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी जंग का. और अगर उसकी जरूरत ना पड़े उनको तो वो कहीं भी घुस सकते हैं ना. जहां पर कोई इंसान नहीं घुस सकता वो वहां घुस के अपनी जंग जीत सकता है. इस आइडिया से DRDO ने 2010 या 2012 में उनके ऊपर 21 दिन तक रिसर्च की, और MRI रिपोर्ट्स, और सबसे एक चीज समझ में आई थी कि उनके बॉडी में सूर्य की रोशनी से पानी बनता है अंदर, और वो पता नहीं कहाँ गॉल ब्लैडर में जाके छुप जाता है, उसके बाद पानी मिलता नहीं, बिकॉज ही हैज नेवर वेंट टू पी और पूप.
also in those 16 days और उन्होंने कहा कि 11 साल की उम्र से उन्होंने कभी जिंदगी में लाइफ में he has not seen toilet, वो गए ही नहीं तब, क्योंकि वो लेते नहीं है इसलिए वो निकलता भी नहीं. And this is all true story about this man. Why I'm telling you this is because that's how he trained his mind. तो आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि आप कुछ भी कर सकते हो. ये आपको समझना है कि आप अपने दिमाग को कितना शक्तिशाली मानते हो. Right? Making sense? Why did I share it? Just because people are struggling to fight with negativity, I want to tell you, you can't fight water. Fighting negativity is still easy. But there is a gentleman who fought with water for 81 years and he died at the age of 92. तो पूरे 81 साल उन्होंने बिना खाए पिए जिंदगी काटी. 2020 में उनका देहांत हुआ था. You can read about him. He is a very famous personality in Gujarat. Okay. So this was my point. But coming back to the same point कि वो जो negative feelings है ना हमारी उन चीजों के साथ, जैसे आकांक्षा ने बोला अभी कि उनको किस चीज पर आ रही थी अभी, I forgot it. YouTube, Instagram, करेक्ट. तो पहले अपने पे गुस्सा नहीं करना है, अपने को एक्सेप्ट करना है. सारा काम जो होगा वो अपनी एक्सेप्टेंस के साथ होगा, अपने प्यार के साथ होगा. I have to love myself. I know Amrish is very busy, Ranish is very busy. We also happen to be business partners. हम साथ में काम नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग busy. अब इनको चिढ़ आती होगी, गुस्सा आता होगा, कभी-कभी मुझे भी आया था. But the point is I have to love myself and then work accordingly and things will work accordingly as the way we want. Clear है guys यहाँ तक? Right, so we tried some examples of thing. ये जितना भी था Instagram, YouTube ये thing है, मोबाइल फोन thing है, और बहुत सारी devices thing है, जैसे इनका टोस्टर था. Movie is a thing, yes. और क्या है? Okay, now she's talking about people, cyber security information. Okay. The feeling which she has for rich people is jealousy and anger. It might be very less now, but think about it. आप खुद रिच बनना चाहते हो और रिच लोगों के लिए आपके मन में घृणा, ईर्ष्या, जलन और गुस्सा भरी है. क्या कभी रिच बन पाओगे? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को क्या फीड कर रहे हो? रिच लोग तो बुरे होते हैं और दिन भर खुद बोल रहे हो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी लाइफ जीऊं, मैं दुनिया में सारी कंट्रीज घूमूं, मैं ये भी देख लूं, मैं वो भी कर लूं, एंड यू नो आई शुड डू ऑल द थिंग्स. बट so I personally want to become rich, but I hate rich people. How is it possible? You're repelling your own, future because of this. You understand how your subconscious is defined and designed in this way. No, I understand, Rajat. I just noted the emotions that came to my mind. Which is fine. Yeah. Which is fine. See, I'm not saying that today it is, but when you started it, probably it was there, right? Yes, now yes. this should be completely eradicated because my feeling for rich person should be that he's the one who is contributing the most to the society. And I'll tell you how. See, Mukesh Ambani could be a biggest spendthrift in the country. Uski बीवी 1-1 करोड़ के लहंगे पहनती है. Could be. But Reliance की वजह से 4 लाख लोगों का घर चल रहा है भारत में. बताओ अगर Reliance कंपनी नहीं होती 4 लाख लोग कहाँ जाते हैं? तो he's a contributor and not just in this. ये जो जियो हम सब जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे भारत में इतने सस्ते में है, ये उसी की देन है. Not just Jio. Reliance is doing so many things. Of course, he is gaining a market और उसकी अपनी strategy है customer acquisition की. मैं नहीं कह रहा कि वो ethically सब कुछ सही कर रहा है. But he is still contributing, right? And he's contributing in a big way. So every rich person, you have to understand, Deepika, most of the times he'll be contributing. Worst case में वो इतना contribute कर रहा होगा कि उसके यहाँ 200 एम्प्लॉय होंगे, उनका घर चल रहा होगा, भले ही वो उनको गाली देता हो, बट उनको रोजी रोटी यहीं से मिल रही है. So he is contributing in 200 lives. That's why he is becoming rich, right? So the feeling about rich people should be that rich people are contributors. And if I become rich, the feeling for rich is I have to contribute, not to make money. Making money should become secondary. If you are contributing to people's life, people will come and automatically give you money. आपको मांगना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आपके हाथ में रख के जाएंगे पैसे.
but you have to think as a contributor, and all the rich people have to be felt as contributors. मैं नहीं कह रहा कि सारे rich लोग सही तरीके से कमाते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, मैं कौन होता है डिसाइड करने वाला कि वो गलत तरीके से कमाते हैं सही तरीके से? मुझे तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, इसलिए I will always feel that all the rich people are right people, they're good. And that feeling in my mind about the rich people of jealousy, chalan hone wali, I have to kill that. It is a killer, right? और वो anger भी kill करना है. So there are, there are numerous situations. Okay. Okay. So your feelings for your own body: unsatisfied, not confident, very critical about your own self. Okay. Something what? Something myself. I didn't get it. I have to get my next second. Okay, no problem. But majorly it is unsatisfaction completely and very critical about your own self. क्योंकि कल ही आपको एक सेलिब्रिटी से आपके डिंपल्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट मिला था, right? So anyway, I'm not saying that it is today you are changed, but some point of time you had those feelings. Now I'm trying to just analyze those feelings. Okay, so the point is, if I don't love my body and if I don't love how I look, how can I expect anyone else to love me and accept me the way I look or the way I am? And the same goes for Nidhi also. She has a lot of problem with the body weight she's getting. She first has to accept and love that. Because of that same body weight, she might have got those roles in her movies, and because of her structure, probably the director or the movie artist or the person who was producing it found her the most apt person to be for that role. I don't know. It could be possible. She might not know. Nobody might have told her. So first you have to love what you have already, and you should not be having any negative feeling about any of your body thought parts, because believe me, I used to hate myself, at least how I used to look some few years back, especially during when I was in my 20s, early 20s. I used to literally hate myself, and believe me, nobody loved me also, because I never loved myself. The day I started feeling good about my own self, और मैं शीशे में देखा ना यार मैं इतना बुरा भी नहीं लगता, ठीक ही लगता हूँ, इतना बुरा भी नहीं. I started getting people in my life. Things started changing for me actually, right? So what I'm trying to say, it's not just about any structure of the body, it's about the entire thing. It's a God gift to us, understand. Of course, we may improve it by doing right exercise, by doing right diet, and by doing everything. But whatever we have is our natural structure, right? भगवान ने मेरी जैसी नाक बनाई है, वो मेरी बनाई है ना, वो it's a gift to God. It cannot be a curse. I used to feel it as a curse few years back, but I understood probably this was the biggest gift that the God gave to me. इसके अपने फायदे होंगे तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, जिसने समझ में आएंगे उसे समझ में आएगा, because उसके प्लान में तो कोई गड़बड़ होती नहीं ना, वो हर चीज उसकी एकदम परफेक्ट होती है, right? So before even I feel that this structure of my body or this thing is imperfect, I have to delete this thought first. This feeling of imperfection is creating more imperfection in my life. So even if I want to get, in your case, Deepika, you might want to get slim, because you hate that fat in your body, you're accumulating more and more fat whenever you are a little complacent. Even if you are not complacent, you might feel कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, but आपका बहुत कम weight हो रहा है lose. Am I correct? That's exactly what is happening. Getting very slow results is demotivating. Exactly. Or no results also is demotivating. But yes, like being positive about it, I'm working on myself and I'm eating correct. So that I've started doing. And thanks to your 7 days program, which helped me to wake up early, which has changed my lifestyle and maintaining it. That's one thing. But the second point is, whatever I have today, I have to respect, accept, and love it. If I have a fat in my body which I don't like, I have to start loving it, because that's a gift. And even though I want to eliminate it, I have to accept it, I have to love it,
and I have to let it go, and it will automatically go. Will be as easy as Nidhi getting a mango every day. Believe me, you will not do any efforts, and you will realize that you have lost 5 kgs in next 3 months. And I am not saying when I say don't effort, you will not exercise. You will do everything what you are doing, but in your head it will not be effort. You will enjoy it. because आप जैसे दिखते हो पहले तो आप उसको ही लाइक करते हो ना. अगर नहीं भी कम हुआ इस बात का कोई मलाल नहीं ना, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ अभी भी. I'm only improving, but right now also I'm look good. I love myself whatever I am. See, I have to accept myself. Understand? जो भी मैं हूँ physically, मुझे वो accept करना पड़ेगा और मुझे उससे प्यार करना पड़ेगा और अपने आप जैसी मुझे शेप चाहिए मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने आप को पॉजिटिवली फीड कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा. और जब मैं अपने आप को नेगेटिव फीड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पॉजिटिव रिजल्ट चाहने की, जो आज आप कर रहे हो. So you have to start loving, accept your fat. It's okay to have it. Perfectly okay. कोई दुनिया नहीं खत्म हो गई. Still you are getting your work. Still everything is working. May not be that quick, but still working. But if you love it and then you work on it, it will go on its own. You will not have to make a lot of effort. And even if you make a lot of effort, you will see a lot of results coming from. So start loving and accepting that fat in your body. That doesn't mean कि आप उसको हटाओगे नहीं. मतलब see, this is an aspiration. जो दिया भगवान ने बहुत अच्छा दिया है. But I aspire to be. वरना तो मेरी हालत और वो जो इसको 2 रुपए किलो चावल मिलता है सड़क पे उसकी और मेरे में कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि उसका काम चलता रहा, उसको 2 वक्त का खाना मिल तो जाता सरकार से 2 रुपए. क्यों करे वो काम? इसका थॉट ये भी तो एक आता है ना, when I love my life, when I love everything about myself, मुझे काम ही क्यों करना है, काम तो चल रहा है ना. But that's not how it works. When I accept it, I feel my gratitude towards God. भाई मुझे सब देने के लिए धन्यवाद. See, imagine हम सबके हाथ पैर चेहरा सब बॉडी सलामत है, right? Both of you. I'm right now talking to Deepika and Nidhi because I have seen this coming from them till now. God has made everything perfect, at least the body part. आपकी आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ बढ़िया है, बाल वाल है, right? How many times are we thanking for it? क्या मैं रोज उठ के अपनी आंखों के लिए थैंक यू बोलता हूँ कि यार मेरे भगवान ने 2 आंखें दी और एकदम बढ़िया दी. मेरे तो चश्मा भी लगा, आप लोगों की तो वो भी लगा. हेल्दी बॉडी के लिए मैं दिन में कम से कम बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि ऐसे ऐसे वर्स्ट केसेस आते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ. आप उस इंडस्ट्री के हो ना, आप उस इंडस्ट्री. हाँ, इसलिए 1000 बार धन्यवाद कहना चाहिए मेरे हिसाब से कि हम लोग हेल्दी हैं और सारे ऑर्गन सही सलामत हैं इस वजह से. And that feeling of gratitude will get you the desired result, believe. Stop complaining about this fat. Stop being very critical about these elements of your body because it is still perfect. आपका कोई काम नहीं रुक रहा. इतने मोटे नहीं हो कि दरवाजे के बीच से नहीं निकल पा रहे. It's still absolutely fit and fine. रजत सर मैं हाँ बोलिए राज प्लीज. मैं की बात है तो हमारी एजेंसी में जो बंदा है गोडाउन से माल निकालता है, पैक करता है, और ये 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था. तो उसका एक रिलेटिव मतलब कल ही मेरी उससे मुलाकात हुई. मैं कहा दीपक क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या बात है? तो बोला सर मेरा भी फोन नहीं उठाया है और कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. फिर मैंने उससे ऐसे पूछा कि वो तो ठीक है प्रॉब्लम है, पर एक चीज मेरे को नहीं समझ में आया, इतना दुबला पतला क्यों होता जा रहा है? काफी हेल्दी था, अभी यंग है. तो बोलता उसको शुगर की बीमारी हो गई. देन मैं रियलाइज कर रहा हूँ थैंक गॉड, मतलब है वो आदमी जो एक तरह से हमाल का काम कर रहा है. अपन बोलते हैं ना कि शुगर की बीमारी किसको होती है, जो कुछ भी नहीं करता और काफी अच्छे मतलब लाइफ स्टाइल जी रहा होता है, उसको शुगर होता है. देन मतलब जो हमाल का काम कर रहा है, सोचिए मतलब कार्टून उठा उठा करके नीचे गोडाउन से लेकर के ऊपर मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेकर के बेस में लेके आ रहा है, उसको शुगर हो रहा है. हम तो मतलब हमको इतना भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दिया, हमको कुछ नहीं. Okay. We'll close in 2 minutes. Okay. So Rajni ji, thank you for sharing. I hope you get the point. Message is clear.
कि बॉस जो है पहले उसको प्यार करना शुरू करो, अपने आप डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा. I should have gratitude for all the things which God has given to me. Right? तुमको पता है दीपिका, जो तुम्हारे जो नेचुरल डिंपल्स आते हैं उसके लिए लोग लाखों रुपए डाल के करते हैं, आप हॉलीवुड बॉलीवुड वाले. Have you ever said thank you to God for this? Yes, I'm grateful for my dimples. I thank my grandfather and my mother a lot because I got it from them. It's fine, but वो दिया तो भगवान ने था, उसके लिए grateful हो तो बहुत अच्छी बात है. और stop being critical about your body because whatever God has given to you is the most perfect thing that we could have given. क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि हम सबके शरीर के सारे अंग, सारे कलपुर्जे बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है. और ये जो बाहर के स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, इन पे आप कभी भी काम कर सकते हो by being grateful and happy for whatever you have, and you will see magical results after it. Okay, so what we have to work on, ये जो बॉडी से रिलेटेड जो नेगेटिव फीलिंग आती है ना देख के शीशे में कि यार मेरा पेट निकल रहा है, मेरा ये हो रहा है, get rid of this feeling. This is our next exercise to our health. Okay, so I think we are already very late, हमने काफी लेट कर दिया आज, but I hope the discussion was fruitful for all of us. I am closing the recording now.